सो बरें दिसता की सगळे जाणां मेळून आमचे जे बिचीस आसा ते क्लीन करता आणि जशी आमी लँड क्लीन करता तशी आमकां हे बीन अवेरनेस करपाची गरज आसा की लोकांक की फिशरमॅन सुद्दां जे आसा ते उदक सुद्दां हे करपाचें न्हू डर्टी करपाचें न्हू म्हणून दो इट इज अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स अ बिगर गोल म्हणटा तशें आमी धाकटे धाकटे हे करूनच व्हडले खुबशे आमचे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स सुद्दां आसा हांव आतांच तांकां सांगतालें की आमी 1 दीस 2 दीस क्लिनिनेस ड्रायव्ह करता पण तुम्ही वर्सभर आमची सिटी आसा ती क्लीन दवरता खरें खरें तांकां पयलीं एप्रिसिएट करूंक जाय आणि एवरी इयर इंडियन कोस्ट गार्ड हो प्रोग्राम राबयता आणि आमकां इन्वायट करता खूप अभिमानाची गोष्ट दिसता की जे देशा खातीरची सेवा करता त्यांच्या बरोबर येवन आमी बीन मातशें कितें तरी आमचे कडसून कितें करता सगळे कडेन जे बिचीस आसा थंयसर तेंच्यांनी हो ड्रायव्ह चालू केलेलो आसा आणि हे ड्रायव्हा मदीं आमी पळयता की सगळे भुरगीं जे गव्हर्मेंट स्कुलाचे सगळे हांगा येयलेले आसा अंजुमन स्कुलाची भुरगीं आसा तशें CSFचे लोक आसा आमचे बाकीचे म्युनिसिपल कावन्सिलाचे वर्कर्स हांगा येयलेले आसा अशे बाकीचे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाचे लोक हांगा येयलेले आसा हो क्लिनिनेस ड्रायव्ह सकाळच्यान हो स्टार्ट जाल्लो सकाळची 7ची हो तेंच्यांनी क्लिनिनेस ड्रायव्ह स्टार्ट केलेलो आसा हांव खरेंच जे हिसपान आख्खे आमचे गोंयभर आनी आख्खे देशभर जशें रक्षण हे कोस्ट गार्ड आमचे करता हे देशाचे तशेंच तेंच्यांनी आपल्या स्वताच्या भितर बीच कसो क्लीन दवरपाचो हेजेर कशें क्लिनिनेस दवरपाचें हेच्या बाबतींत आमकां पूर्ण डिटेलान सांगलेलें आसा लोकांक तेंच्यांनी एडवायस केलेलें आसा फिशरमॅनाक बाकीच्या लोकांक सुद्दां जे समुद्रा भितर आपली पिनलेली जाळी उडोवपाची न्हू बाकीचे वस्तू आसा ते उडोवपाचे न्हू अशें खुबशें कितें कितें आमकां तेंच्यांनी डिटेलान एक्सप्लेन केलें आसा आमी परत एकदां तांकां थैंकफुल म्हणटा। कोस्ट गार्ड ने गोवा में नॉर्थ एंड साउथ बीचेस में डिवाइड किया है जितने भी हमारे स्टाफ है और यूनिट्स है सारे मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड रेस्पेक्टिव बीचेस सबको डिटेल किया हुआ है एंड दे हैव कंडक्टेड इन अ ग्रैंड वे एंड दिस इज एक्चुअली इंस्टेड ऑफ क्लीन अप ड्राइव मोर ऑफ अवेयरनेस ड्राइव। अब बच्चों को और पब्लिक एंड टूरिस्ट सबको हम ये बताना चाहते हैं इंक्लूडिंग फिशरमैन दैट कि हमें बीच को कैसे क्लीन रखना है और कूड़ा फैलाना नहीं है। स्वच्छता जो ड्राइव है उसको आगे लेके कैसे जाना है और सागर अभिमान का एक ड्राइव था टू क्लीन अप द ओशियन ये सब एक साथ हम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि सो दैट मराइन लाइफ जो है ना वो प्रिजर्व हो बिकॉज जल है जल की वजह से आज हम लोग यहाँ पर जिंदा है दैट इज द डाइवर्सिटी एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी वाटर इज द मेन कंपोनेंट। तो अगर ओशियंस को हम इफ वी कीप इट डर्टी then we will lose all the marine life and probably it will be a bad impact on the environment.